Good evening. Am I audible to all of you? Right. So, firstly, talking about UPSC exam in general. So, any serious aspirant, you will see goes through two stages in your preparation. Okay. With time, you will also realize that you will go through two stages in your preparation. The first stage will be when you will feel you have a lot on your plate. You will have to have GS also, CSAT also. Then you might be doing your optional subject, then making notes for your prelims exam. Obviously, all of you might be making short notes also, right? So that you can revise easily. And then there will be the next stage in which you will feel a bit relaxed, a little less work to do, less on your plate. ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? You will also feel that there are a lot of failures that you are encountering while your journey. ठीक है? सपोज आप कुछ कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग CSAT, यू आर डूइंग अ टॉपिक, वो नहीं हो रहा है, यू अगेन अपेयरिंग फॉर मॉक्स सॉल्व नहीं हो रहे, यू विल फील यू विल ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ डाउनवर्ड स्पाइरल भी हो सकता है, यू विल फील लिटिल मोर स्ट्रेस्ड इन दिस जर्नी. एंड देन इन दिस पार्ट यू विल बी मोर रिलैक्स्ड, लगेगा हो जाएगा, टाइम है, एक तो टाइम मेजर इशू. ठीक है, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, टाइम लगेगा कि है, हो जाएगा, मोर पॉजिटिव ऑल्सो, अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स द एग्जाम. नाउ अ स्मार्ट एस्पिरेंट इज द वन जो ये वाली स्टेज से पहले गो थ्रू कर जाए, राइट? यू विल गो थ्रू बोथ दी स्टेजेस. This is my guarantee. As a serious aspirant, you will go through both of these stages. As a smart aspirant, you should go through this stage first. Right now should be the one when you should be doing CSAT also, GS also. You should be focusing on where you are failing. You should be focusing on your weak areas so that you have time to improve. You should also know how to motivate yourself so that you can actually manage your exam when your exam is nearby. ठीक है, ये स्टेज को बाद में छोड़ दोगे तो you will not have scope for improvement. ठीक है, this is the main key with CSAT also. What we do is we think that CSAT जो है एक option kind of passing marks लाने हैं. 33 marks are passing, you guys must know, right? Qualifying exam है, also you have 200 marks, 33% passing marks. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा, and it might be true. ठीक है, what the thing that is happening is एक myth है CSAT से related that the exam is very difficult. ठीक है, ऐसा नहीं है. You'll see in 2012, I think 12-13 के around, there were certain questions of your topic time and work also जो कि were of a higher level of difficulty. एंड रिसेंटली यूल सी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस तो उतने डिफिकल्ट है ही नहीं जितने पहले आते थे. इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती थी, अब तो वैसे भी नहीं आती. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट हो गया है. द थिंग इज एग्जाम हैज इवॉल्व्ड. ठीक है, जैसे यहाँ पर DI के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अलॉन्ग विद वन सेट यू यूज टू हैव 4 क्वेश्चंस. सो ये सेट कर लिया, दैट मीन्स यू आर डूइंग 4 क्वेश्चंस, यू आर स्कोरिंग 10 marks. बट नाउ what UPSC has changed is they have added topics. For example, you have a topic of remainders which was not asked earlier but is being asked in the recent 4 to 5 years. Remainders ka topic is being asked. ठीक है, so along with the evolution of the examination, we have to evolve our way of studying also. We have to expand our scope also. जो topics नहीं पूछे जा रहे हैं उस पर इतना focus नहीं करना है. Instead of that, focus on the topics that are being asked. For that you need PYQ analysis, right? So our preparation of CSAT is going to happen in the following stages. The first thing is, if you are not someone who has already prepared for aptitude for any other examination, or if you are someone with a very little weak background of mathematics and English, then in this program, this December time is the right time to start with your preparation. Don't leave it for the last month, don't leave it for the last 2 months. Even though it is a qualifying examination, आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, you don't want to lose out everything just because आप एक qualifying exam के लिए नहीं कर रहे, right? एक एग्जाम में मतलब it hurts a lot to not even get 66 marks and you are prepared for mains also, you are prepared for your optional also, right? इतने marks देते हो and you have to start over that journey again just because आप 66 marks के लिए you couldn't fight. ठीक है,
सो बी अ स्मार्ट एस्पिरेंट, डोंट बी एन एस्पिरेंट जो एंड के लिए अपना काम छोड़ते हैं, ठीक है. राइट नाउ इफ यू विल स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, नहीं भी हो रहा है तो यू विल हैव टाइम सो दैट यू कैन इम्प्रूव यूजिंग मॉक्स ऑल्सो, यूजिंग डिफरेंट अलग से क्लासेस ऑल्सो, रिविजन ऑल्सो. वहां पर जब एग्जाम से पहले नहीं होगा, ऑलरेडी आप यू विल बी स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स. You will have GS mocks also, sectional mocks also. You will have your full length में you will have to do analysis. Most of the students don't even get time to analyze the mocks as well. ठीक है, तो वो भी करना है. तो इतना सारा काम है. Don't leave that CSAT portion for that time. It is my advice to someone who has a little bit issues in the aptitude. If you are very, very confident that yes, I will score this much, then it's up to you, right? So our CSAT preparation, the first stage of your preparation is, how will we cover the basics? For example, if we have a topic of HCF and LCM in the classroom, the first thing will start with the basics. That is HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसके कौन से types के questions होते हैं, application, HCF with remainder, LCM with remainders. So all the types will be covered. So for basics, you have your classroom classes, right? After basics, the next problem that students face is, where do we practice from? ठीक है, basics कर लिए, समझ में आ गया, अब practice कहाँ से करें? For that, I give you assignments that I will give you in the classroom itself. Some questions we'll try questions of every type, and further practice you will do using your self-study time assignments के through. ठीक है? After the assignments and basics are done, the next step which you have to see is, आप अब अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो कि जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, जितना आपने पढ़ा है, वो एग्जाम में रेलेवेंट है या नहीं. एंड एग्जाम में अगर आप सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो, will you be able to clear those questions of CSAT that are being asked? For that, you have to do PYQs. ठीक है, अब सब बोलते हैं, सबने सुना है PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CSAT ऑल्सो, GS ऑल्सो, बट PYQs CSAT में करने कैसे हैं? Once you are doing this, बेसिक्स और टॉपिक वाइज जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको PYQs भी टॉपिक वाइज ही सॉल्व करने होते हैं. बिकॉज आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कि 2011 से लेकर 2024 तक आप अपने PYQ को पलटते रहो और उसमें से लेट से आपने टाइम एंड वर्क किया है तो आप हर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ढूंढो एंड वो सॉल्व करो. इट विल जस्ट लीड टू वेस्ट ऑफ योर टाइम. फॉर दिस वी डिस्कस द PYQs इन द क्लासरूम ऑल्सो टॉपिक वाइज. जैसे जैसे एक टॉपिक खत्म होता है उसके PYQ की डिस्कशन होती है. If you want to take your sweet time and do your PYQs on your own, there is a YouTube session also which is like available for all aspirants on the channel only, YouTube channel. In that we have covered all the basics of all the topic wise PYQs of CSAT. ठीक है, तो वो you can take your time, watch those videos. कोई भी doubt आता है you can ask that to me in the classroom only. ठीक है, now we are done with the basics also, we are done with the practice also, and we are done with PYQs also. अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप एग्जाम में बैठते हो, CSAT से डर लगता है. ठीक है, फॉर दैट टू ट्रेन योर माइंड टू दैट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू गिव मॉक्स. तो आफ्टर दीज 3 स्टेजेस वी कम टू सॉल्विंग मॉक्स. ठीक है, अब मॉक्स सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं बिकॉज हमें एग्जाम में बैठ के देखना है हमारे मार्क्स कितने आएंगे, क्लियर होगा या नहीं. With mocks you also form strategies. कई students होते हैं जो कि they do English first and then they do aptitude. So there are different strategies that you form based on your level of preparation and the section which you are comfortable with. ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? Also one more very important point, mocks करते time you also analyze how many questions you have to do. ठीक है, because आप देखो GS में आपको maximum questions करने हैं because you need to maximize your score, right? एक कट ऑफ आएगी based on the score of other aspirants also, but CSAT में ऐसा नहीं है. CSAT में you need to get 66 marks, right? तो CSAT में the ideal way is to realize आपका accuracy कितनी है. Some students do 40 questions and clear the exam, whereas others who know कि हमारी accuracy इतनी नहीं है, that is हम गलत questions भी कर रहे हैं ज़्यादा. For example, verbal में मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप नहीं समझ पाते whether your answer is correct or not, right? So for that
स्टूडेंट्स ऑल्सो अटेम्प्ट 50 प्लस 55 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है, प्लस न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए, बिकॉज PYQ आप 4-5 बार कर चुके होगे एंड इट विल बी लाइक क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता होगा, ठीक है। सो देयर इज दिस बैकग्राउंड ऑल्सो विद PYQs. So for new questions of the same level you will have mocks for it. Apart from it, when we are done with all of this, I will take up a strategy session because I believe it is one of the key aspects of CSAT. Strategy session वही है कि आपने कौन सा सेक्शन बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, हम ना क्वेश्चन पेपर खोलेंगे क्लासरूम में, ठीक है। सो वील सी 2 घंटे में अगर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है एंड यू नीड टू नो विच क्वेश्चंस टू डू, ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच क्वेश्चंस टू स्किप, ठीक है। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जिस पे अगर आप लग गए तो आपके 10-15 मिनट्स चले जाएंगे। अब हमें वहां जाके अपनी इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करनी है, हमें अपनी स्मार्टनेस प्रूव करनी है. दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड इज. I don't want to show UPSC that I can solve the hardest question that you have given me. I want to tell UPSC that this is your exam and I can clear it easily. ठीक है, अपने लिए चीजें easy करनी है. So what we do in strategy session is यही समझते हैं कि कौन से questions करने हैं, कौन से question छोड़ने हैं, based on all the full length PYQs that we will do. अभी तक आपने topic wise किए होंगे. In the sessions we will do complete previous year papers and we will understand solve कैसे करना होता है एग्जाम को. ठीक है, apart from that whatever doubts you will face we'll discuss those in the class as well. ठीक है, any other question regarding this?